बातचीत शुरुआत करते हैं नो योर कंपनी की। और आज हम बातचीत करेंगे रिक्रूटमेंट करने वाली देश की टॉप कंपनी टीम लीज से। टीम लीज ने Q1 में ग्लोबल मंदी के डर से नए जॉब में कुछ कमी की आशंका जताई थी, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में इसको समझना चाहिए क्या इंप्रूवमेंट हुए, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स बड़ा इंकरेजिंग आए हैं और एक बहुत ही अच्छा माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी की CFO रमानी दत्ती जी। रमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हमने देखा कि जो जॉब सिनेरियो है इंडिया का, वो पिछले कुछ समय में काफ़ी उथल पुथल वाला रहा और एक सिमेट्री नहीं बन पा रही थी इसमें। अभी लेटेस्ट सिचुएशन देखें, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के भी लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं, क्या सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है आपको? So as of now, except for IT jobs, tech jobs, we are seeing good hiring trends across all other industry, especially banking and financial services, FMCG, FMCD, pharma companies, telecom companies. The hiring trends are very good and much better compared to last year. Like even in case of TeamLease, last quarter we hired close to 9,000 headcount, and the outlook for next year also is looking like on average we should be able to add 8 to 10,000 kind of net addition quarter on quarter. But we are seeing more of hiring trends happening in major cities, the metros and large cities. However, in smaller places, towns and rural areas, the hiring trends have been relatively on a lower side. And we believe that this kind of trend would continue for the next 3-4 quarters as well. रवानी जी, आप कहेंगे IT छोड़ के बाकी सब सेक्टर्स में ग्रोथ दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली मुझे बताइए किस तरह की ग्रोथ है और किस जियोग्राफीज में ज़्यादा है? So manufacturing, as of now, the discussions are happening. But to be very honest, translation of that into real jobs, we have yet to see on the ground. Mm-hmm. For now, we are seeing jobs in engineering, pharma, those kind of companies. But the major manufacturing job surge, which we have expected after Make in India, that is yet to happen. And however, going with the discussions that we are having with some of our largest manufacturing clients, we believe next 2 to 3 years, there'll be at least a 10% increase in the jobs in manufacturing segment. And in terms of geographies, as you have asked, right now it is concentrated in few manufacturing pockets, few in south and few in north, and it's not very uniform. But going forward, we believe that it would be uniformly spread. Okay, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा एक चीज़ मुझे समझाइए रमानी जी, इतना कैपेक्स अनाउंस किया गया है फार्मा में, मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग सेगमेंट में, सीमेंट में, स्टील में, इवन शुगर में भी बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा हुआ, PLI स्कीम का इतना फ़ायदा हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग उतने जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? Jobs are getting created, Neeraj, to be very honest, and but not that much. Schemes, yes, not that much. Because what's happening is many of these industries that you have mentioned have earlier used informal candidates, informal employees. Those jobs they have converted into formal employment. So that you can see in the data from EPFO and other data, wherein there is a much higher increase in overall employee enrollment in EPFO over the last 1-2 years. So the formal employment is getting very good growth. However, if we have to take overall employment, as you have rightly mentioned, in manufacturing, as of now, we haven't seen the kind of pickup which we expected in the past. And also, the capex in manufacturing segment takes a much longer period in order to set up the plants and the industries. So that's also one of the reasons why is it taking much longer, because employment generation comes after all these capex setups are being done. So that's why I mentioned maybe 2 to 3 years from now is when we can see more number of jobs getting created in manufacturing segment. रमानी जी, क्या ये भी एक प्रॉब्लम है कि चूंकि अब मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन पे बहुत फोकस है, AI का बहुत काम हो रहा है, इस वजह से भी अब वो एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा सही नहीं होगा कि बहुत सारे जॉब बनेंगे, 1 लाख करोड़ का कैपेक्स हुआ तो बहुत सारे जॉब होंगे, ऐसा सोचना अब गलत है। समय बदल गया है, अब ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का काम होता है। I don't think I agree with that view, because we heard similar kind of stories when computers came and some other trends have changed. So we believe if automation comes in, that creates new set of jobs. So some jobs may come down, some on-floor jobs may come down, but it will definitely create more jobs in another segment. So
the overall formal jobs will definitely increase, but whether they'll increase only in manufacturing or only in services, that's very difficult to comment at this point in time. But the overall numbers will definitely go up. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या वो स्किल सेट हमारे पास है? क्या एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास उतने स्किल्ड लोग नहीं है, और हमारे सामने फिर ये समस्या खड़ी होती है कि इंडियन मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट, मोर ऑफ पीपल आर लेबर, नॉट वेरी स्किल्ड, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है. Yeah, you have rightly pointed out the problem, Neeraj, because even at TeamLease, we have been hiring someone every 5 minutes for the last 15 years, but we are hiring only 5% of the candidates who approached us for a job, because rest 95% the same problem wherein they lack the basic skills that are required for a job. And that skill gap is still very huge. So a lot of on-the-job trainings are needed, and even some of the changes that we are talking to the state governments in terms of introducing apprenticeships directly to the companies. So those kind of initiatives are also required, because while there are online trainings and some of these other options available for skill enhancement, and the state governments are also doing some of the skill enhancement programs, we believe on-the-job training, on-the-job internship and apprenticeship for the candidates, at least for a period of 3 months to 9 months, will make them more job ready. मानिए आपने कहा कि 95 लोग आप नहीं ले पाते, आप 5 लेते क्योंकि स्किल्ड वही हैं. इसी से जुड़ा सवाल, वो 95 पर करते क्या होंगे? क्या जो ये गिग वर्कर है जो रिटेल में बहुत काम करते हैं, देश में आजकल बहुत मतलब ई कॉमर्स भी हो गया, उसमें भी अनस्किल्ड लोग चली जाते होंगे डिलीवरी बॉय के तौर पे, या सेल वेल लगती रहती है, तो जो बड़े रिटेल में गिग वर्कर्स हैं, क्या ये उसमें खप जाते हैं, उसमें ग्रोथ आ रही है? Yes. During COVID times, we have seen the maximum growth in e-commerce and gig workforce, and but now that kind of saturated. So we are not seeing a 15-20% kind of growth post-COVID. Because what's happening is that gig employees are also looking for some sort of employment benefits, social security, because in those jobs, they don't get any provident funds or ESIC benefits, insurance. So even in the new labor codes that the government is talking about, they are trying to bring in some sort of employment benefits, even for the gig employees, so that these kind of jobs will also evolve better in future. अच्छा, ये जो दो बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, अभी भी है, वन इज टेक्सटाइल, अदर वन इज लेदर, क्या सिनेरियो वहाँ पे, क्या सिचुएशन है? Unfortunately, in those segments, TeamLease don't have much of presence, because we still see a lot of informal employment being used there. So moderate hiring trends are going in those industries, textile and others. And that number will continue to grow given the kind of GDP growth that is expected over the coming years. So the growth rate will be steady in those industries, but more dependency on casual employees and unorganized service providers for employment over there. ओके, रमानी, आपने शुरू में कहा कि आईटी को छोड़ करके बाकी सब जगह ठीक है. आईटी में क्या प्रॉब्लम है? यूएस में अभी काम धंधा नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है, या एक मेजर डिसरप्शन हुआ है वहाँ पे, ये प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? Again, IT during COVID times, they have peaked. The salaries went to the roof, 20%, 30% hikes, and the hirings also have happened well in advance in anticipation of new projects. And all of a sudden, 2 quarters back, there has been a complete freeze on hiring across the globe. It's not just in India. Even in US, Europe, across the globe, there has been a slowdown in overall IT spending. And we have seen that impact on Indian IT companies as well. Over the last 2 quarters, there is complete hiring freeze across all IT companies. So it's only the replacement hiring that they are doing, attrition hiring. So the new jobs, especially at mid and senior level, the new job creation in IT segment has almost kind of stagnated. And at least 1 or 2 quarters, the same trend might continue. So we are not seeing, at this point in time, we are not seeing any recovery for IT jobs. And we believe maybe Q3 or Q4 of FY24 is where we can see some green shoots. तो क्या इस बार वो लोग कैंपस नहीं जाएंगे? कैंपस हायरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे? No, campus hirings are... Yeah, no, campus hirings are totally different. I'm talking about mid and senior level, the hirings are not. Okay, कैंपस हायरिंग. अच्छा, मिड एंड सीनियर लेवल कब तक शुरू होगा? कोई आइडिया कुछ दिख रहा? और
To be very honest, no one has this idea because we thought maybe from Jan onwards, the hirings will start now that the companies have got their new year budgets and all of that, but it didn't happen. Even Q1 and Q2, we are not seeing any kind of discussions from the client side to initiate the hirings. So at least Q3 or Q4 is when we can expect some sort of hiring to open up. Q3, Q4 कैलेंडर ईयर का शायद थोड़ी बहुत हायरिंग हो मिड लेवल पे, कैंपस हायरिंग होगी क्योंकि वो एकदम जूनियर बच्चे होते हैं। लेकिन पिछले दिन हमने सुना था कि विप्रो ने तो ये भी कहा था कि जो हायर्ड है बेंच में है, फिर आधी सैलरी लो, कुछ करो इस तरह। अच्छा ये बताइए कि ये जो अलग अलग सेक्टर्स में आपने हमें जॉब सिनेरियो बताया, इसमें वेजेस का क्या सिनेरियो है? किस तरीके के वेजेस मिल रहे हैं? जो पहले से हैं उनको क्या अप्रेजल्स मिल रहे हैं, और नई हायरिंग किस तरह से हो रही है? So we used to have an average salary hikes of about 5% appraisal year on year, and COVID, those 2-3 years is an exception. So that's when we had like 11 to 12%. So now those appraisals are getting moderated. So they're again coming down to the levels of 5 to 6% annual inflation in the average salaries. And again, if we take average salaries across industries is kind of different. Like if I take BFSI, the average salaries are in the range of 23,000 starting. I'm talking about the starting range because that's where we cater to. So 24,000, depending again on the location, because large number of hirings are happening in cities and metros. Whereas for manufacturing and textile, these kind of industries, it's still around 21,000. And pharma and others, they're also in the range of 20 to 23,000. But overall, all the average salaries have now have raised above 20,000, 22,000. If I take 3 years back number, for us it was 18,000 average salary for the entry level jobs. So that number has gone to almost 22,000 now. ओके, तो ये एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है जॉब का, जहाँ पे रमानी जी ने हमें अंग्रेजी में समझाया कि आईटी में अभी प्रॉब्लम है, मिड लेवल में शायद जुलाई के बाद कुछ संभावना बनती है, केवल बेंच पे वहाँ पे आ रहे हैं नए लोग। बाकी सेक्टर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, अलग अलग सेक्टर्स में तेज़ी है और वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रहा है। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम रमानी जी की, जो चेन्नई क्लस्टर है, बेंगलोर क्लस्टर है, मुंबई वाला है, जो हैवी इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज़ हैं, वहीं पे नौकरियां मिल रही हैं? Yes, at this point in time, it's very concentrated in those few pockets. So the hiring is also 90% of the hiring is also happening in those pockets only. It's very concentrated, and East is where we are seeing the lowest kind of job creation. But we believe maybe in the coming quarters, once the investments are spread across the cities, we can see more diversified job creation in the country. दो प्रॉब्लम बताई आपने, एक तो ये बताई कि बहुत कंसंट्रेटेड जॉब अभी भी है, जैसा पिछले 30, 25, 30, 40 सालों से हो रहा है कि उन्हीं जगहों पे जॉब क्रिएट हो रहे हैं, और दूसरा आपने ये बताया कि स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि 100 लोग गए तो उसमें सिर्फ 5 लोग हायर हो पाते हैं क्योंकि 95 लोगों के पास वो स्किल सेट नहीं है जो आज की ज़रूरत है। रमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जॉब सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं।